Good evening, friends. Good evening, sir. I hope you all can hear me. Yes, sir. Yeah, there is some background noise that is unavoidable. It cannot be avoided because due to certain unavoidable reasons, I am traveling today. So right now I am at the airport. So I'll be taking this class from the airport itself. My boarding time is 7 p.m. So we can have a class from here itself. I could not get space at any peaceful location, but I think you can hear me well, so that's all right. And as I have told you earlier, that this is our orientation class of Indian Penal Code. And in this class, we will see the basics of IPC, an overview of IPC, and we will chalk out a strategy as to how we are going to do this subject. After this, there will be a break of 3 days, and we will resume the study of Indian Penal Code from Tuesday. Tuesday, because I have to complete a few topics of the previous subject that was going on. But I did not want to postpone this orientation program in which we will study the basic aspects of Indian Penal Code. And to begin with, I have a collection of questions for you. We will go through the questions first of all, just a bird's eye view of the questions, so that we can understand that Indian Penal Code has to be studied in a particular fashion. And before I start, I must tell you that I'm going to do this subject very exhaustively. Right. In fact, in usual coaching classes, certain topics are left out, but we are not going to leave those topics in this class. The reason is that this is not only your coaching class for judicial services, higher and subordinate both, but it is also a class for quality improvement in litigation. It is also a class for opening doors for various other career opportunities that law can offer. And this is an internship program also. At the end of the course, after 13 months, you will be getting a certificate of internship as well. So that is the unique aspect of New Delhi Bar Association initiative. Some of you are new in this group, so I'm telling all these things for the new entrants. So let us see the questions, the types of questions that have been asked. All these questions have been asked in the past. Like the first question is in the inverted commas. So it means that they have lifted this statement from some book. Like crime is a revolt against the whole society and an attack on the civilization of the day. This is a general statement regarding crime.
And now they say elucidate. It means the statement has to be elucidated and essential elements of crime must be discussed. So the main question is essential elements of crime. So we know that there are two essential elements of crime. One is mental element and the other is physical element, mens rea and actus reus. So we have to discuss the elements of crime. So one question will always be there from elements of crime, be it higher judicial services, be it lower. Only the format of question will differ in higher judicial services, right? Most of the questions in higher judicial services will be case based. So they will give you one or two paragraphs of facts, right? The facts will be given, and then you have to decide the case. Topics are the same. The second question is what are the different stages of commission of crime? So stages of commission of crime, right? Like the first stage is formation of intention, the second stage is preparation, the third stage is attempt, and the fourth stage is commission of the crime. When attempt becomes successful, the crime is committed. So these are the different stages of commission of crime. We are going to study in this class today. We will study inchoate offenses like preparation and attempt. The third question is what is meant by mens rea? So you see that they ask this question repetitively. Elements of crime are asked repetitively, right? Mens rea. Explain the dictum. Actus non facit reum nisi mensit rea. So this is a maxim for criminal liability. So we will see the elements of criminal liability in today's class. How far motive is necessary for determining a crime? So importance of motive. So in the introductory classes, we are going to learn the difference between intention and motive. And many examples, right? Many cases are there in which the distinction between intention and motive has been explained. Is there any exception to the dictum of mens rea? Yes, there are many exceptions to the dictum of mens rea. There are many exceptions in the Indian Penal Code itself, where proof of mens rea, that proof of mental element, is not required at all. So the prosecution has to prove just the wrongful act. Mens rea doesn't have to be proved. Fourth question is, it is not enough to label the statute as one dealing with a grave social evil and from that to infer that strict liability was intended. It is pertinent also to inquire whether putting the defendant under strict liability will assist in the enforcement of regulations. There is no fine in penalizing, and it cannot be inferred that the legislature imposed a strict liability merely to find a luckless victim. In the light of this statement, not his, elucidate the doctrine of strict liability under criminal law. This is a very interesting topic where usually criminal law does not impose a strict liability. Strict liability is imposed in civil laws, like we have the chapter of strict liability in law of torts. But in criminal law also, there are provisions of strict liability. So why strict liability in criminal law? Right, which is generally anathema to criminal law. Strict liability should not be imposed. Because when you are imposing strict liability, you are reducing the number of defenses available to the culprit, right, to the accused person. Generally, every accused person has the right to defend himself. That is his right to fair trial. But in certain circumstances, this right to fair trial can have reasonable restrictions. One such situation is where the law imposes strict liability. For example, if you are doing some overt act, helping some perpetrator of crime, then at least the prosecution has to bring a proof of some overt act. That is called vicarious liability. In section 34 or section 154 of IPC, we will see vicarious liability, which is also a concept of civil law. So certain concepts that are actually prevalent in civil law have been applied in criminal law also. Same is the case with strict liability.
where the defenses available to the accused person are very few. So we are going to see the concept of strict liability as well as concept of vicarious liability in criminal law in one single chapter, and this will be done in the introductory class itself. In law, a man's motives are irrelevant. So motive, right? This is a cusp question because it requires knowledge of Indian Penal Code as well as Indian Evidence Act. That what is the importance, what is the significance of motive in fixing criminal liability. Generally, it is stated that motive is not relevant, but in certain circumstances, motive becomes relevant. So we will see what are the exceptions to this statement. Though the statement happens to be true, but there are certain exceptions to this rule. Distinguish between intention and motive. This is a very important question, right? Usually a 10-mark question in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar judiciary. This is the very common question. Distinguish between intention and motive. Indicate the importance of motive in the law of crime. So here, this distinction can be explained with the help of several examples. Very case laws are also there. Write a short note on inchoate offenses. Right, we are going to do this topic in today's class. Inchoate offenses means incomplete offenses, offenses that could not be completed, like attempt, abetment, conspiracy. These are inchoate offenses. Write a short note on the presumption of innocence of the accused. So this is a golden principle of criminal jurisprudence that every person is presumed to be innocent until proven guilty, right? And that too beyond reasonable doubt. So we have to write a short note on presumption of innocence of the accused. In this, we will explore the situations in which the presumption is made, that is usual, general, and there are exceptions also. There are certain exception situations in which this presumption will not be done, where the statute itself has created presumption of fact or presumption of law, whereby an accused is not considered to be innocent. Discuss if there is any purpose to differentiate specific defenses from general defenses. Now, general defenses, we have a dedicated chapter that starts from section 76 in Indian Penal Code. So that are general defenses, means you have those defenses against any charge. Specific defenses are appended to the respective offenses only, right? Like section 300 has certain specific defenses. Where there is charge of murder, there are certain specific defenses which, if proved, will lead to the change in the charge, right? So murder will be converted into culpable homicide not amounting to murder when such specific defenses are proved. So these specific defenses can be found in the respective definitions itself. Whereas general defenses, there is a dedicated chapter for this. So we'll distinguish between the two. General defenses are for acquittal, right? They completely obliterate your culpability. But in specific defenses, your culpability is not obliterated, your culpability is not removed, but the intensity of the charge can be reduced. Intensity of the charge can be decreased. So specific defenses don't lead to acquittal. They lead to conversion of charges, right? If there is some intense charge, then it will be diluted. So that is the function of specific defenses. Question 10, whether the provisions of Indian Penal Code are applicable to extraterritorial offenses. This is in the first part of Indian Penal Code. We are going to study this. Yes, there are provisions in the IPC that are applicable to extraterritorial offenses, means where offense has been committed abroad. Offense has been committed not in India, right? But if the offender comes to India, he can be tried in India. Can an offense committed outside India be tried in India under Indian criminal law? Yes. Explain in the light of case laws. So we will see some 2 or 3 landmark cases on this subject. What is the jurisdiction of the courts in India to try an Indian citizen for an offense committed beyond India or a foreigner in respect of an offense committed within Indian territory? In this respect, we will study the law of extradition also.
Right, we have a law for extradition as well. So we will study that. A little of extradition act will also be studied, and some references to the international law will also be made. That is necessary here for answering this question. Don't answer only from IPC, right? Two or three paragraphs should be brought from Extradition Act, and certain references to international law can also be made. If there are some judgments of International Court of Justice, they may also be referred, right? That will add charm to your answer. So we will study here itself, right? We will study here itself. तो हम ये भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्राडिशन एक्ट भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ भी हम यहाँ देखेंगे. यहाँ पे आप देखें कि थोड़े फैक्ट्स भी आपको दे दिए. एन इंडियन सिटीजन commits a murder in Uganda, can he be tried and convicted of murder in any place where he is found in India? Answer is yes. तो relevant provisions हम देखेंगे, right? और ये भी देखेंगे कि इंडिया के साथ युगांडा का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या नहीं. अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, right, so we are going to see whether there is extradition treaty with India. If yes, then we will have some references to that extradition treaty also, extradition act also. An Indian citizen commits adultery in England, which is not an offense in that country. Can he be prosecuted in India? Same question, right? The facts are differing, but the question happens to be on the same theory. So you can see the topics, right? What topics are important? Generally, what topics are covered in your main examination, in your preliminary examination? Landmark cases and recent cases, both are very important. At least one paragraph should be for jurisprudence, one paragraph for citing some recent judgment, if any recent judgment is there. So this is how we are going to learn the answer writing also. Explain the following terms as used in IPC. So this is from definition section, right? Very short answer questions from definition section. Explain the law relating to constructive liability. Distinguish between the words common intention and common object. Common intention is used in section 34 of IPC. Common object is used in section 149 of IPC. What is the difference between the two? Right, tabular difference plus case laws. What do you understand by the phrase an act done in furtherance of common intention? Again, this is question on section 34. See that section 34 is important. Section 149 is also important. A commits the offense of theft. All offenses against property, against human body are important. Can A be convicted under section 380 IPC read with section 34 IPC? Give reasons and also refer to the case law, if any, on the point. Cases must be two. One landmark case and the other recent case. Then the next question is on the topic of murder. Again, question number 15, common intention to rob. So this again involves the discussion on common intention. Question 16, jointly plan to beat up X. While X is being assaulted, his daughter intervenes, who is molested by B. While retreating from X's house, B picks up a watch. For what offense A, B, C, D are liable? Again, it is a question on section 34. But this is a case-based question. Here they have given you facts. So not a direct question. They have given you facts. And you have to decide. So this is a question on section 34 IPC. There is a pre-arranged plan between A and B to beat C. During the beating, A tells B to murder C. Consequently, B murders C. Is A guilty of murdering C? Again, this is a question of section 34, but there is a pre-arranged plan also. So it is a question on conspiracy as well. Right, so you have to write both the subjects here, both the topics here. 6 persons are charged under 302, read with section 149. 3 of them are acquitted by the trial court. So you know that section 149 requires the minimum number to be 5. 3 are acquitted.
which means the number of accused left are only two. So the question is whether section 149 is still applicable or not. So again, this is a question on section 149, and there are beautiful cases on this subject. In furtherance of common intention, again a question on section 34. During the trial, A and B took the defense that they are not guilty of murder, but only for causing hurt to D, as they did not give the fatal blow, and only C is liable for the murder. Who gave the fatal blow? Right, whether this defense is tenable or not. Is it a sustainable defense? No, it is not a sustainable defense, because section 34 becomes applicable here. Then we have question 20. Suddenly a fight began between A, B, and C. Sudden fight. Now, sudden fight is a specific defense. So this is a question on specific defense. And then section 34 is also mentioned here, which means we have to answer on both notes, right? We have to answer this question on the specific defense of sudden fight and section 34. Question 21. A and B successively and independently wound C with murderous intent. C dies from the loss of blood caused by both the wounds together. But the fact remained that C would not have died from either wound alone. Discuss the criminal liability of A and B. Right. Now again, right, what liability should be imposed on A and B? Because A and B had no concert, they were not in conspiracy, there was no prior arrangement, neither section 34 applies here, nor there is any conspiracy here. So each should be liable for the wound the individual inflicted. Right. So here, from the report, it is clear that A inflicted certain wounds that wasn't enough to cause death. B inflicted certain wounds that wasn't enough to cause death. But here the answer is a little tricky. We have to see at what point of time B hit C. C dies from the loss of blood caused by both the wounds together. Right? B came later. Now the word independently is given here. It means A and B had no cahoots. They were not in cahoots with each other. एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं थे. तो देखना यह है कि जब ए का वुंड इन्फ्लिक्ट किया जा चुका था और जाहिर सी बात है कि ब्लड निकल रहा था, तो ए ने जो वुंड कॉज किया था वो बी को तो पता था, बी को विजिबल था, बिकॉज व्हेन बी वाज हिटिंग सी he saw that C was already wounded, so grievous hurt had already been caused to C. तो यहाँ पर ना दोनों की लाइबिलिटी एक जैसी नहीं होगी. B is a greater sinner. B का पाप बड़ा है. तो here we will impose liabilities, respective liabilities impose करी जाएंगी. इस पर केस लॉ है, हम केस लॉ डिस्कस करेंगे कि जहां पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो अगर क्राइम करते हैं तो क्या फॉर्मूला हमें अडॉप्ट करना चाहिए. राइट. तो वो हम एक अलग चैप्टर में देखेंगे. If two persons commit the same act, can they be guilty of different offenses in respect of that act? सेम एक्ट किया है दो लोगों ने, क्या ऐसे सिचुएशंस हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो गिल्टी हो डिफरेंट ऑफेंसेस के, एक्ट सेम बट ऑफेंसेस आर डिफरेंट? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल. एक्ट्स आर डिफरेंट, बट हम सिर्फ अपने एक्ट के लिए नहीं, उस एक्ट के रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी लायबल होते हैं. राइट. जो हमारा एक्ट है, एक्टस रियस है, उस एक्टस रियस के क्या रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस है? व्हाट आर द रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस? अगर उसका रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस ग्रीवियस हर्ट है तो ग्रीवियस हर्ट का भी चार्ज लगेगा, और अगर उसका रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस है डेथ, तो अगर डेथ हो गई तो डेथ का भी चार्ज लग सकता है. तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज पहले लगा, बट लेटर ऑन एक महीने बाद विक्टिम की डेथ हो गई उन्हीं वुंड्स की वजह से. दोज वुंड्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ, दे वर द कॉज.
तो फिर वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज कन्वर्ट कर दिया गया मर्डर में, जबकि वहीं पर एक दूसरे एक्यूज पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन उसका विक्टिम ठीक हो गया मिराक्युलसली, ही रिकवर्ड। राइट, तो वेयर ही रिकवर्ड, वहां पर चार्ज तो बदल जाएगा ना, फिर उसका चार्ज तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही रह गया, उसके चार्ज में तो नहीं लगाना मर्डर का। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्बर? इन व्हाट केसेस इज हार्बरिंग मेड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड? डायरेक्टली सेक्शन से पूछा हुआ क्वेश्चन है हार्बर से। What are the various punishments Indian Penal Code? What are the various punishments prescribed by the Indian Penal Code? देखिए, इंडियन पिनल कोड ने तो कई तरह के पनिशमेंट डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आप यहाँ पे लिखें। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट तो आप लिखेंगे ही कि पेनल्टी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट भी है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर, राइट। लेकिन उन सभी पनिशमेंट्स के पीछे व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट? Like what are the theories of punishment, like retributive theory, deterrent theory, reformative theory, compensatory theory, right? These are various theories of punishment. इस पर एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क केस है जेकब जॉर्ज का, वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे if we have time. तो enumerate the offenses punished by a sentence of death. सिर्फ enumerate करना है इसमें. So very simple question asked in UP exam. A gives 10 strokes with stick to B. Illustration से पूछ लिया है. सीधे this question has been asked from the illustration. So remember one thing. Whenever you see a fact-based question in your examination, 90% probability है कि वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के साथ जो इलस्ट्रेशंस लगे हुए हैं, उन इलस्ट्रेशंस में से ही पूछेगा. So either they are from the illustrations, 90% from the illustrations appended to respective sections of IPC, and remaining from any landmark case, right? किसी भी landmark case का ही वो fact उठा लेंगे, ABC कर देंगे उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है उनके नाम को, और वो आपके सामने दे देंगे. आपको पहचान लेना होगा कि ये कौन सा लैंडमार्क केस है. यू नो दिस रिकॉग्निशन विल बी मार्क्ड. ये पहचान लेना कि हाँ भाई इस फैक्ट को आपने पहचान लिया, ये शो करता है कि आप लैंडमार्क केसेस को जानते हैं. दूसरा कि अगर आपने उससे रिलेटेड कोई रिसेंट जजमेंट दे दिया तो फिर तो एग्जामिनर उसका डिलाइट विल नो बाउंड्स, उसका डिलाइट जो होगा, राइट, वो असीम होगा कि भाई एक रिसेंट जजमेंट भी आपने दे दिया उसी सब्जेक्ट पर. दैट शोज दैट यू आर अपडेटेड. सो वन यू हैव शोन दैट यू हैव कमांड ओवर सेक्शन. तो कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो पहले सेक्शंस लिखना चाहिए. फर्स्ट पैरा कि कंसर्न्ड लॉ क्या है, तो कंसर्न लॉ में यू हैव टू राइट सेक्शंस. ठीक है. तो इसमें एक अच्छी बात ये भी है, कई बार आप देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड के कई ऑफेंसेस दूसरे लॉज के डिफाइंड ऑफेंसेस के साथ ओवरलैप करते हैं. अब जैसे आईटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, आप उनके ऑफेंसेस को देखें तो इंडियन पिनल कोड वाले भी चार्जेस लग सकते हैं, और जो जो स्पेशल लॉज बने हुए हैं उनके चार्जेस भी लग सकते हैं. इवन दो एग्जामिनर ने आपसे आईपीसी का क्वेश्चन पूछा है, बट देन apart from the charges of IPC, if you see that the facts are indicating charges from other laws also, right, it is a good idea to incorporate those also, though you won't linger on them much, right? आप उस पर ज्यादा लिंगर नहीं करेंगे, लेकिन आप वो मेंशन जरूर कर देंगे. इससे आप एग्जामिनर को ये दिखा देते हैं कि आपको दूसरे लॉज का भी पता है, आप जज बनने लायक हैं, या यू आर एलिजिबल टू बिकम अ जज. दिस इज व्हाट यू शो टू देम. You know the other charges also, right? So IPC has overlapping charges, right? Well, the charges mentioned, the offenses mentioned in IPC overlap with the offenses of Electricity Act, Information Technology Act, NDPS Act, right? It can be
any other law like Foreign Exchange Management Act, right? Earlier it was FCRA. तो दूसरे भी हैं, कोसा भी है, राइट? कोसा का भी है। तो आपके कई ओवरलैपिंग प्रोविजंस हैं और आपके सामने जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स से अगर वो प्रोविजंस के भी चार्ज बन सकते हैं तो मेंशन करो in your first paragraph itself. So after you have written the sections in the first paragraph, in the second paragraph, now what you should do, आपका काम है कि जो चार्ज है, राइट, जैसे कि चार्ज 420 का लगा है, 420 का चार्ज लगा है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे नंबर वाइज लिखे आप कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द चार्ज ऑफ सेक्शन 420 एंड देन द गिवन फैक्ट्स इन द केस। जो आपके क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स को मैच करो उन इंग्रेडिएंट से। तो पहले डेफिनेशन को आपको ब्रेक डाउन करना है, यू हैव टू ब्रेक डाउन द डेफिनेशन। अब जैसे सेक्शन 420 के ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई, उस डेफिनेशन को 4 या 5 पॉइंट्स में तोड़ो, राइट? हर एक पॉइंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन 420 का। सो एवरी पॉइंट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 420। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, देखो कि वो फैक्ट्स किस इंग्रेडिएंट से मैच कर रहे हैं, राइट? अगर सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं, if the facts given in the question are in consonance with or to match with the ingredients of the sections जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हैं, तो इसका मतलब कि वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है, दैट ऑफेंस इज प्रूव्ड। और जिस ऑफेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए फैक्ट से मैच ना करें, कुछ मैच करें कुछ ना करें, इसका मतलब कि दैट चार्ज इज नॉट प्रूव्ड। तो उन चार्जेस को आप ड्रॉप कर देंगे एंड द चार्जेस दैट रिमेन वो कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है? So in this way you are writing an answer of substantive law, but you are showing to the examiner that you know the procedural law also, you know how to frame charges also, right? चालाकी से you are showing your aptitude in law, आप लॉ में अपने एप्टीट्यूड को दिखा पा रहे हैं। तो यही होना चाहिए स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पैराग्राफ में ऑल द सेक्शंस, सेकंड पैराग्राफ में सेक्शंस और दिए हुए फैक्ट्स का मिलान करना है, यू हैव टू मैच द टू। थर्ड में यू राइट अ लैंडमार्क केस, फोर्थ में यू राइट अ रीसेंट केस इफ एनी। एक पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पे भी, जो सेक्शंस जो आपने मेंशन किया है उसमें कोई ज्यूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल तो होगा ही ना, कोई तो डॉक्ट्रिन लग रहा होगा, राइट? ज्यूरिस्प्रूडेंस से या कोई भी डॉक्ट्रिन आप उसमें जो अप्लाई करते होंगे, आप वो पैराग्राफ भी रखें। और लास्ट में यू डिसाइड, राइट? आप उस केस का फैसला लास्ट में लिखते हैं इन द लाइट ऑफ अफोर स्टेटेड फैक्ट्स या अफोर मेंशन फैक्ट्स, राइट? ऐसा लिखते हुए आप फिर उस केस को डिसाइड करते हैं। बेस्ट होता है कि जो दिए हुए फैक्ट्स का हूबहू कोई केस आपको मिल जाए जो बिल्कुल इन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड था। तो ये जो रिकॉग्निशन है, दिस विल मेक योर एग्जामिनर वेरी हैप्पी, ठीक है? इस सेक्शन फिर क्वेश्चन 27, ये तो स्टैम इजी, दिस सेड द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन के ना पेमेंट पर जो इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है वो सीधे सेक्शन उठा के लिख देना है। What is the law regarding the enhanced punishment in IPC? तो enhanced punishment habitual offenders के लिए होता है, जो habitual offenders होते हैं उनके लिए enhanced punishment होता है। State and illustrate the law of cumulative penalties as stated in Indian Penal Code. Give reasons for your answer. वो give reasons छूट गया है यहाँ पे। तो cumulative penalties means कई बारी एक से ज्यादा चार्जेस लगे होते हैं, हर एक चार्ज अगर प्रूव हो गया तो सबकी अपनी पनिशमेंट होगी, और एवरी चार्ज देयर विल बी अ सेपरेट पनिशमेंट। तो उस तरह से कई पेनल्टीज, तो क्यूमुलेटिव पेनल्टीज, तो क्यूमुलेटिव पेनल्टीज का क्या लिमिट है, किस हद तक ये पेनल्टी जा सकता है? और क्वेश्चन नंबर 30 है सॉलिटरी कंफाइनमेंट। दिस इज ऑन solitary confinement. So what did you notice? Right, I just gave you 30 questions of past 10 years. What do we notice here? That they have asked questions from any area of IPC. Actually, you cannot select at all. They are asking questions from offenses against human body, offenses related to property, right? And in fact, they can ask you question on counterfeit coins also.
That is also important. They can ask you question on criminal negligence, public nuisance. They can ask questions from the definition segment. They can ask questions from general exceptions, specific exceptions. So not a single area will be left, right? Only one or two provisions are there that have never been asked. But you should not make a selection. So when you are studying any law, please don't make a selection. That is why we will do the subject exhaustively. We are not going to leave any section except a few, very few sections that I'll ask you to do yourself because my intervention is not required for its explanation. So now we start, right? Since we are going to study criminal law, let me tell you, I'll be using a lot of jurisprudence. Jurisprudence is very important. So almost every section has underlying jurisprudential principles that we will see. So first of all, we start with stages of crime. What are the various stages of crime? This is the basic, right? And we have seen in the question section that questions have been asked from this subject, from this topic. So before completion of crime, human mind has to pass four steps. The first is from here you can start writing or you can take the screenshot, whichever suits you. So before completion of crime, human mind has to pass four steps. The first one is intention to commit an offense. So formulation of intention is important. Without formulation of intention, one person cannot act, right, and commit a crime. So intention has to be there. But let me tell you, there are exceptions to this. Sometimes something which is of civil nature has been criminalized. So where there is no intention to commit an offense, even then it has been made a criminal liability, right? For different purpose, like uh, dishonor of check. Now, dishonor of check is actually something of civil nature that involves recovery of money, right? So, civil suit should be filed for recovery of money. But then Section 138 has been criminalized for public policy, right? There are economic reasons behind that. तो ऐसा होता है, राइट? आप इस तरह के ऑफेंसेस को स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस कह देते हैं. अब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज नहीं हो सकती है या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में मैरिज नहीं हो सकती है, वहां पर उसे पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है, राइट? वहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंट की बात ही पैदा नहीं होती है. देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन एट ऑल. द स्टैट्यूट हैज क्रिएटेड दैट एज एन ऑफेंस. स्टैट्यूट ने कहा कि ये करोगे तो इरादे से करो, गैर इरादे से करो, कोई बुरा इरादा हो या ना हो, गिल्टी माइंड हो या ना हो, वो ऑफेंस है. यूं भी आप कह सकते हो कि प्रोसिक्यूशन ने मुक्त कर दिया है, राइट? प्रोसिक्यूशन ने फ्री कर दिया है उसे प्रूफ नहीं करना मेंटल एलिमेंट को, इंटेंशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा प्रोसिक्यूशन का कम हो गया है. इंडियन पिनल कोड के अंदर भी, एनआईपीसी भी, आप चाहें तो देख सकते हैं कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आपको लिखा मिलेगा नोइंगली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, राइट? तो ये जो वर्ड्स है ना, ये मेंटल एलिमेंट को शो करते हैं. दीज वर्ड्स शो मेंटल एलिमेंट. तो वहां पर जहां पर डेफिनेशन में ही स्टैट्यूट ने ही लिख रखा है एक्सप्रेसली दीज वर्ड्स, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुली, अग्री वर्ड लिख दिया, तो अग्री लिखने का मतलब ही होता है कि देयर इज मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व, क्योंकि अग्रीमेंट कैन नॉट बी विदाउट मेंटल इन्वॉल्वमेंट. तो वो लिख दिया. तो वहां पर हम मानते चलेंगे कि प्रोसिक्यूशन को दोनों एलिमेंट्स साबित करने पड़ेंगे. द प्रोसिक्यूशन हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग बोथ द एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट एज वेल एज फिजिकल एलिमेंट. तो रॉन्गफुल एक्ट किया है एक्यूज ने, ये भी साबित करो, राइट? और मेंटल एलिमेंट, उसमें इंटेंशन था, कोई मोटिव था, वो भी साबित करो अगर कहते हो कि इंटेंशन था या मोटिव था. और जब सेक्शन में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर भार है दोनों साबित करने का.
दोनों के दोनों साबित करते थे। लेकिन जिन सेक्शंस में मेंटल एलिमेंट का कोई रेफरेंस नहीं है, देयर इज नो वर्ड इंडिकेटिंग मेंटल एलिमेंट, देयर इज नो वर्ड मेकिंग रेफरेंस टू मेंटल एलिमेंट, तो इसका मतलब कि नाउ the prosecution doesn't have to prove intention, the prosecution doesn't have to bring any evidence in respect of mental element, उसे बस wrongful act हुआ यही साबित कर देना है, that will be enough, right? वहां पर जब लॉ ने इंसिस्ट नहीं किया है फॉर प्रूफ ऑफ नॉलेज, तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, एक सच ये है कि कोई भी क्राइम बिना मेंटल एलिमेंट के नहीं होता है, राइट? जनरली कोई भी क्राइम, नो क्राइम कैन टेक प्लेस विदाउट मेंटल एलिमेंट, intention to commit a crime has to be there, but what matters is that whether the statute has insisted on proof of mental element or not. तो अगर इंडियन पिनल कोड में किसी सेक्शन में जहां पर ऑफेंस डिफाइन किया गया, वहां पर अगर नोइंगली वर्ड लिखा हुआ है या नॉलेज वर्ड लिखा हुआ है, इंटेंशन वर्ड लिखा हुआ है, अग्री वर्ड लिखा हुआ है, तो वहां पर तो आपको मेंटल एलिमेंट भी साबित करना है, दैट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट दैट मस्ट बी प्रूव्ड। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है किसी सेक्शन में तो फिर नहीं लाना है। इसलिए इंडिया में ब्रिटेन की तरह ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग या टेक्निकली स्पीकिंग, कि बिना मेंस रिया के क्राइम नहीं हो सकता। इन एवरी क्राइम देयर इज ऑलवेज मेंस रिया। ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है ब्रिटेन में आज भी, बट नॉट इन इंडिया। Why? Because in India, the Indian Penal Code itself has taken up the responsibility of insisting on mens rea in certain cases. So there it has made a reference to mental element in various ways. And in certain sections, it has not made any reference to the mental element. So no proof of mental element is required. So proof तो नहीं चाहिए, मेंटल एलिमेंट ना हो तो भी नहीं कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम है, कन्विक्शन बिल्कुल हो सकती है अगर रॉन्गफुल एक्ट इज प्रूव्ड। तो स्टेजेस देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। सेकंड इज वंस इंटेंशन हैज बीन फॉर्मुलेटेड यू गो फॉर द प्रिपरेशन, राइट? सो प्रिपरेशन टू कमिट इट। अब हम जानते हैं कि तैयारी करना, गौर करने की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। जो प्रिपरेशन होता है वो पनिशेबल नहीं होता, राइट? क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो और प्रिपरेशन के स्टेज पे ही अगर पकड़ लिए जाते हो, राइट, इफ यू आर नैप्ड एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तो यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट, यू कांट बी पनिश्ड बिकॉज देयर इज अ डाउट, राइट, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और वो डाउट ये है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं हिम्मत जुटाकर प्रिपरेशन के स्टेज तक तो चले जाता हूं, लेकिन मैं वहां से वापस भी आ सकता हूं। अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसे आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सके। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं यहां से वापसी नहीं जा सकता। मीन्स देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी and ample time that I can be penitent. I can repent for what I have thought. Right? This is locus penitentia. Right? We will study about it in today's class. This is called doctrine of locus penitentia, which means that there is possibility of penitence and hence the probability of returning without causing any harm. At that stage, you have not inflicted any harm, and therefore, you can make an exit from that point, right? Remember, this is based on the maximum of equity that every person is considered to be good by nature. हम सभी का नेचर गुड ही माना जाता है, राइट? ऑल ऑफ अस हैव ह्यूमन सेंटिमेंट्स। तो पॉसिबल है कि गुस्से में या प्रोवोकेशन की वजह से हम एक स्टेप आगे उठा लेते हैं, प्रिपरेशन स्टेज में चले जाते हैं,
लेकिन फिर भी बहुत मौका हमारे पास होता है कि हम पछताकर वापस हो जाए, राइट। तो यहाँ पर प्रिपरेशन के स्टेज में एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाता है कि क्या पता ये वहां से वापसी जा सकता था, क्योंकि इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म अभी शुरू नहीं हुआ है, राइट। जो नुकसान है वो शुरू नहीं हुआ है, तो उस स्टेज से पहले आप वापस हो सकते हैं। इंसान को ये मौका दिया जाना चाहिए, और अगर मुझे उसी स्टेज पे पकड़ लिया जाता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे मिलेगा। इसलिए याद रखें कि प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल एट ऑल, राइट। इफ यू आर stopped at the stage of preparation, if you are caught at the stage of preparation, then that is not punishable at all. But there is an exception to this rule, और exception ये है कि preparation of dacoity is a punishable offense. And not only this one, right? If you see section 122 of Indian Penal Code, where you are making a preparation for waging war against the state, there also, if you are caught at the stage of preparation, then you will be punished for that, right? So preparation generally not punishable, it is not punishable, but it can be punishable in case of dacoity, like section 399. यहाँ पर आप dacoity को इतना heinous offense माना जाता है, it is considered to be such a grave offense कि preparation stage को भी punishable बनाया गया है, so that no one even dares to prepare for it also, right? Similarly, you can write section 122 also. I have given an example of section 399, but 122 can also be written here, right? Attempt to commit a punishable offense, right? So if you are attempting, that is the third stage now. So first you formulated intention, then you started making preparation, and then once your preparation is complete, you are going to make an attempt now, right? So making an attempt means you are taking some action, you are going to perform some act, कुछ आप एक्ट करने जा रहे हैं, कुछ overt act होना चाहिए, right? Which is towards the commission of the crime. Now let me tell you here, it need not be the penultimate act. Penultimate act का मतलब होता है कि the last act, कि जो अगर प्रिवेंट ना हुआ होता तो ऑफेंस हो ही गया होता, राइट। जैसे कि मैंने चाकू चला दिया था, बीच में किसी ने आके चाकू पकड़ लिया, तो ना पकड़ा होता तो चाकू लग ही गया होता सामने वाले को। सो दिस इज द लास्ट एक्ट, राइट। इसके बाद तो ऑफेंस हो ही गया था, हैड इट नॉट बीन प्रिवेंटेड, राइट। तो इसे आप कहते हैं पेनल्टीमेट एक्ट। तो ये तो अटेम्प्ट है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि अटेम्प्ट साबित करने के लिए पेनल्टीमेट एक्ट ही हो। अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं जो उस दिशा में है, विच इज इन दैट डायरेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, रिमेंबर जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो दैट में ऑल्सो बी अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, राइट। अटेम्प्ट भी सीरीज ऑफ एक्ट्स हो सकता है, इट कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। तो उसमें अगर आपने पहला एक्ट भी किया कि जिसके बाद थोड़े और एक्ट करने थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी पर मर्डरस अटैक करने के लिए मैं निकला और वो बंदा अपने घर की छत पे था, तो नीचे ही मैंने वहां पे एक नीचे पड़ा बॉटल देखा, तो उस बॉटल को मैंने, शीशे का बॉटल था थोड़ा टूटा हुआ, उसको मैंने उठा लिया टू यूज इट एज मर्डर वेपन। और अब मुझे सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पे जाना था, क्योंकि मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से दैट पर्सन वाज स्लीपिंग ऑन द टेरेस। अब किसी ने मुझे बोतल उठाते समय ही पकड़ लिया, हालांकि अभी मैं बोतल उठाता, फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता, फिर मैं छत के दरवाजे को, अगर खुला हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं तो तोड़ता और बार्ज इन कर जाता मैं टेरेस पे, राइट। कई सारे एक्ट्स करता मैं, लेकिन मुझे बोतल उठाते ही पकड़ लिया गया। मेरे उस दोस्त ने मुझे पकड़ लिया जो ये जानता था कि आज ये मर्डर के इंटेंशन से आया है यहाँ पर, एंड ही वांट्स टू सेव मी फ्रॉम दैट। तो इसलिए वो पीछे दौड़ता हुआ आ ही रहा था, ही हेल्ड मी। तो यहाँ पर आप देखें कि इट इज नॉट अ पेनल्टीमेट एक्ट, लेकिन वो पहला एक्ट शुरू हो गया था टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम, इन द डायरेक्शन ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये जो स्टेज पर जहां मैं पकड़ा गया, अगर इसी स्टेज पे पुलिस आ जाती तो मैं अटेम्प्ट के लिए लायबल था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन, राइट,
जो छोटा सा प्रिपरेशन मैंने किया कि मैं आया यहाँ तक, उसके बाद मैंने बोतल ढूंढा, बोतल उठाया, मर्डर वेपन के इंटेंशन से उसे उठाया, ये प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, ये एक एक्ट है जो कि पेनल्टीमेट एक्ट नहीं है लेकिन अटेम्प्ट है, बिकॉज इट हैज बिगन। तो इसलिए अटेम्प्ट के लिए राइट जनरली हम डिफाइन करते हैं, जो डेफिनेशन सही नहीं है, इट इज द लास्ट एक्ट विच इफ नॉट प्रिवेंटेड द क्राइम वुड बी कमिटेड। वो आखिरी एक्ट जो अगर नहीं प्रिवेंट किया गया तो क्राइम हो जाएगा। इसे तो आप बोलते हैं पेनल्टीमेट एक्ट। लेकिन जरूरी नहीं कि ये वो लास्ट एक्ट ही हो अटेम्प्ट। इसके पहले वाला एक्ट भी अटेम्प्ट कहा जा सकता है, बशर्ते कि इट इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द क्राइम। क्राइम का उसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। ये साबित होना चाहिए कि उस एक्ट को किया गया था क्राइम को करने के पर्पज से। एक ओवर्ट एक्ट, एक दिख सकने वाला एक्ट किया गया था क्राइम को अंजाम देने के पर्पज से, राइट, सो दैट द रिजल्ट इज दैट क्राइम विच इज इंटेंडेड, तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। It need not be the penultimate act and attempt is always punishable. इसके पीछे jurisprudence क्या है? What is the jurisprudential principle behind this? वो ये कि प्रिपरेशन तक जब हम रहते हैं तो विक्टिम को उस समय तक पता नहीं चलता है। जनरली द विक्टिम डज नॉट नो अबाउट प्रिपरेशन, राइट, सो ही इज नॉट अलार्म्ड, नो एंजाइटी इज कॉज्ड टू हिम, नो रीजनेबल फियर of life or limb is caused to him. But when we make an attempt, right, what do we generally see? That the victim comes to know of it, right? जब आप attempt करने जाते हैं तो generally क्या होता है? Victim को वो पता चल जाता है, या victim gets alarmed, या society को पता चल जाता है। So there is an alarm caused. तो alarm cause कर देना भी एक injury। आप मुझे अगर डरा देते, राइट, अब जैसे कोई मेरी तरफ दौड़ा चाकू लेके, हालांकि रोक लिया गया, लेकिन उस वक्त मैं नर्वस हो गया हूँगा, उस वक्त मैं सदमे में आ गया हूँगा, एक अलार्म हो गया होगा, एक एंजाइटी कॉज हो गई होगी, राइट। तो इसलिए अटेम्प्ट को एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, बिकॉज इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इट ऑल्सो शोज दैट द पर्सन हैज द प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी टू कमिट क्राइम्स, राइट। जिनकी प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी नहीं होती है वो तो अक्सर इंटेंशन फॉर्म करके ही छोड़ देते हैं, या प्रिपरेशन तक भी करके छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी डिग्री ऑफ सिंफुलनेस देखिए कि आई डिड नॉट स्टॉप एट दैट, आई वेंट फर्दर देन दैट, व्हिच शोज दैट आई एम to some extent dangerous for the society. I have the instinct to commit crime, right? If attempt is successful, then crime is complete. जब अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो क्राइम हो गया। सो दीज आर द 4 स्टेजेस। यही वो 4 चरण हैं क्राइम के, या 4 स्टेप्स दैट ह्यूमन माइंड टेक्स फॉर कमिटिंग क्राइम। देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट। अटेम्प्ट टू कमिट सर्टेन ऑफेंसेस आर स्पेसिफिकली मेड पनिशेबल वाइड एक्सप्रेस प्रोविजंस इन द स्टैट्यूट। कुछ ऑफेंसेस जिनके कि मैंने सेक्शंस यहाँ पर लिख के आपको दे दिए। आई हैव गिवन यू द सेक्शंस हियर, राइट, प्लीज नोट डाउन दीस सेक्शंस। राइट, प्लीज नोट डाउन द सेक्शंस। इन सेक्शंस में आप देखेंगे कि अटेम्प्ट वर्ड मेंशन्ड है। इसका मतलब कि इन सेक्शंस में अटेम्प्ट के लिए एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो attempt to commit that particular offense is punishable under those respective sections। उन sections में वो punishable है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वंस attempt is established, एक बार attempt अगर साबित हो गया तो फिर punishment हो जाएगा। जैसे सेक्शन 307, 308, 309, 326B, 356, 57, 393, 398,
इन सब में जो ऑफेंसेस मेंशन है उनके अटेम्प्ट के पेनल्टी भी दिए हुए हैं, का पनिशमेंट भी दिया हुआ है। राइट, द पनिशमेंट हैज बीन स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिस्पेक्टिव ऑफेंसेस। राइट, अब जो बाकी ऑफेंसेस है उनका क्या, क्योंकि बाकी ऑफेंसेस जो है उनके अटेम्प्ट का पिनल प्रोविजन कहाँ है, तो उनके अटेम्प्ट का पिनल प्रोविजन एक ही है, सेक्शन 511, सेक्शन 511 इंडियन पिनल कोड में आप पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन है वो, जिसमें आपको मिलेगा रेसिडिवरी सेक्शन। राइट, उसमें क्या खास बात है कि जिन ऑफेंसेस के लिए उनके अटेम्प्ट के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन आईपीसी, आईपीसी में जिन ऑफेंसेस की अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, उनके अटेम्प्ट की सजा सेक्शन 511 के फॉर्मूले के हिसाब से दी जाएगी। Right, so the punishment will be given in accordance with the formula prescribed in section 511. Right, so that is why I have given this paragraph here. So please note this down. Attempt to commit certain offences are specifically made punishable by express provisions in the statute. Examples are before you, right? But punishment for attempt to commit other offences, अगर दूसरे offences को commit करने का, sorry, right, but punishment for attempt to commit other offences जो ऊपर नहीं दिया गया है, there is a general provision contained in section 511 of the Indian Penal Code. ठीक है, अटेम्प्ट की एक अगली विशेषता क्या है, इसकी अगली विशेषता है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज एन इनकोएट ऑफेंस। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, ये अधूरा ऑफेंस है, इनकम्प्लीट ऑफेंस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अटेम्प्ट के, तो पहला कि अटेम्प्ट को पनिशेबल क्यों बनाया गया है, व्हाई इज अटेम्प्ट अ पनिशेबल ऑफेंस, तो आंसर है an attempt is made punishable because every attempt, even if it fails of success, even if it doesn't become successful, creates an alarm, anxiety, which of itself is an injury. Right, if I am shocked, it's an injury caused to me, not a visible one, but an injury has been caused. Moreover, by committing an attempt, the wrongdoer has shown his propensity to become dangerous, propensity to jeopardize the peace and tranquility of the society. तो इसलिए इसकी पनिशमेंट तो होनी चाहिए। Attempt to commit an offense is said to begin when the preparation is complete and the culprit commences to do something. To do something, some act is done with the intention of committing the offense and which is a step towards the commission of the offense. यानी कि ऑफेंस कमिट करने की दिशा में कुछ कृत्य, कुछ काम, कोई एक्टिविटी, सम एक्ट हैज टू बी डन, राइट, विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। तो प्रिपरेशन के बाद कुछ एक्ट होना चाहिए, सम ओवर्ट एक्ट, प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा, सम ओवर्ट एक्ट हैज टू बी देयर। द मोमेंट ही commences to do an act with the necessary intention, he commences the attempt to commit the offense. कोई भी कृत्य क्राइम को अंजाम देने के इरादे से तैयारी के बाद, छोटी तैयारी बड़ी तैयारी जैसी भी तैयारी के बाद जो कर दिया गया वो अटेम्प्ट, it need not be penultimate act towards the commission of the offense. I have already explained this. Should not be the last one. Had it not been prevented, the crime was almost done. That is called the last one. That is called the penultimate act. So it need not be the penultimate act towards the commission of the crime. It should be one of the acts in the series, right, where it is proved that after the stage of preparation, the wrongdoer, the accused person, did some act which was in the direction of the crime.
which was for the purpose of fructifying the intention, right? To give effect to the intention, then that is an attempt. Attempt has begun. If that person is caught at this stage also, he will be liable for the offense of attempt. Right. So the act need not be penultimate act towards the commission of the offense. It must be some overt act towards the commission of the offense. ढेर सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं इसके, इसी नोट्स में आपके पास a number of questions, right? At least 30 questions are there और 30 केस लॉस भी हैं, right? क्योंकि कहीं कहीं पर ना कभी कभी अटेम्प्ट का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, it becomes a little tricky. So I'll keep on telling you several stories. There are two important tests that help us to infer as to when preparation ends and attempt begins. Right, ऊपर हमने theory तो पढ़ लिया कि some overt act is done after the preparation, which is in the direction of crime, तो वो attempt है, that is an attempt. लेकिन test कैसे करें? How to test that? How to find it out? कि attempt has begun, attempt has commenced. Two tests are there. Test of proximity, and let me tell you here, objective tests ये नहीं, these are not objective tests, though we will try to make it objective as far as possible, but unfortunately a lot depends upon the subjective satisfaction of the judge. So we have to see whether the judge is satisfied with this or not, right? So all we can do is to make a compilation of various cases of different facts, so that whenever a set of facts come before us, we can see whether it has been decided or not, right? If it has been decided, simply I'm sorry, there was some connection error, it has been restored now. So two tests are there, please see that. One is test of proximity. I'm sharing again. So we have two tests for identifying the stage when attempt begins and preparation ends. One is test of proximity. Here, test of proximity signifies the act in proximity with the crime. What is the distance between the two? If you find the act is very closely related to the crime, very closely related to the crime, and it was because of some external factor that the person was prevented from giving effect to his act, तो वो attempt है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर proximity देखना है, right? Causa proxima, we also call it causa proxima. So we have to see proximity or causa proxima, means it should be an act which can be directly related to the crime. There should be direct causal connection. Even if it is not a penultimate act, it should be an act among the series of acts having direct connection with the crime. So lot depends upon the subjective satisfaction of the judge here. Then comes the test of locus penitentiae. Right, if it appears to the judge that there was ample opportunity, there was sufficient time for the accused person to make change in his mind. Yeah. All of you are facing the same difficulty. My voice is cracking. Yes, sir, it's cracking a lot. Everyone, for everyone, this is a problem. Now means can you hear me properly now? Should I go ahead? Means
because I'm using the personal hotspot of my mobile. So maybe it is because of that. Sir, it's fine now. Yes, Kritika, Sir, it's fine now. it's fine now. चलो तो देखते हैं फिर अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना. सर बीच बीच में बस ब्रेक हो रहा है, बट इट्स फाइन राइट नाउ. हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दो टेस्ट बताए हैं अटेम्प्ट प्रूव करने के लिए, राइट. एक है टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी और दूसरा है टेस्ट ऑफ लोकस पेनिटेंशियल. लोकस पेनिटेंशियल में जज साहब ये देखते हैं कि क्या सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी था कि वो अपना माइंड चेंज कर लेता. ये ना एक डाउट है, और वो इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. अक्सर हम आवेश में आके कदम बढ़ा तो लेते हैं, राइट, लेकिन अगर वो सेल्फ हार्मिंग चीज होती है तो फिर हमारा दिमाग हमें रोक लेता है, राइट. 90% लोगों की यही साइकिल होती है. हम गुस्से में आते हैं, सामने भागते भी हैं, कदम उठा लेते हैं, कदम आगे बढ़ाते ही हम तुरंत ही फिर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम सब आम आदमी हैं, राइट. हम सब आम आदमी हैं, गुस्से में अपराध करने लग पड़ते हैं. लेकिन चूंकि हम सब में हमारा विजडम, राइट, उसे थोड़ा सा भी मौका मिल जाता है तो फिर हम रिट्रीट भी कर लेते हैं. ये कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है. दिस इज कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी. दिस इज मोस्ट नेचुरल फॉर अ पर्सन टू डू. अगर उसे 5-10 मिनट का भी कूलिंग ऑफ टाइम मिल जाता है, अगर आपको थोड़ा सा भी कूलिंग ऑफ टाइम मिल जाएगा, आपका विजडम विल प्रिवेल ओवर योर इम्पेटस, राइट. जो आपने इम्पेटस पैदा हुआ है, जो आपने इम्पल्स पैदा हुआ है, आवेग पैदा हुआ है, द विजडम विल प्रिवेल, राइट. तो सिंस दिस इज अ कॉन्सेप्ट ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजी, तो हम ना पेनिटेंट हो जाते हैं, मींस वी बिकम रिपेंटेंट, और आवर विजडम प्रिवेल्स ओवर आवर इम्पल्स. जो भी फोर्स हमारे अंदर पैदा हुआ था उस पर हमारा विजडम हावी हो जाता है. अगर हमें थोड़ा सा भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए, और यहाँ पे टाइम सफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि कई घंटे, इट कैन बी 5 to 10 minutes ऑल्सो. 5-10 मिनट के लिए ही एक इंसान की रैशनैलिटी उसके गुस्से के सबजुगेटेड हो जाती है, राइट. माई रैशनैलिटी गेट्स सबड्यूड, गेट्स subjugated by my anger, right. But in a very short span of time, if there is some cooling off allowed to me, my wisdom prevails over my impulses and my rational self comes to the fore. So there is a resurgence of rational self, right. So this happens with most of us, with most of us. और जिनके साथ ये नहीं होता है वही है असली अपराधी, राइट. परवर्टेड लोग, डिस्टॉर्टेड साइकी के लोग, राइट, जो अपराध करने के लिए ही बने हैं. शायद वही इंस्टिंक्ट उनका सबसे डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है, राइट. क्राइम हमारा डोमिनेंट इंस्टिंक्ट नहीं है. इट इज नॉट आवर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट. बट सम पीपल आर ऑफ सच नेचर कि इनको इस मामले में भी कूलिंग ऑफ नहीं मिल पाता है, राइट. 5-10 मिनट में भी वो कूल ऑफ नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, कोल्ड ब्लडेड रिवेंज लेते हैं. ये लोग ऐसे होते हैं जिनको की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. दे शुड बी पनिश्ड बिकॉज दे आर ऑफ डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर, दे आर ऑफ परवर्टेड साइकी, राइट. बट व्हाट इज द कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस, व्हाट इज द जनरल बिहेवियर ऑफ द पीपल, राइट. हम प्रोवोक्ड होते हैं, हम गुस्से में आते हैं, और उसके बाद तुरंत गुस्सा हमारा ठंडा भी हो जाता है, राइट. या ठंडा नहीं भी होता है तो बहुत सारा अंदर में कड़वाहट भरे हुए, कीपिंग बिटरनेस इन आवर हार्ट, हम रिट्रीट कर जाते हैं कि छोड़ो हटाओ, राइट. अपने काम पे फोकस करते हैं. दिस इज द बिहेवियर ऑफ मोस्ट कॉमन पीपल, राइट. तो इसलिए यहाँ पर जो कोर्ट है वो ये भी देखेगा कि जिस स्टेज पर मुझे प्रिवेंट किया गया करने से ऑफेंस, उसमें और ऑफेंस में दूरी कितनी थी, टाइम की और स्पेस की. व्हाट वाज द स्पेशियो टेम्पोरल डिस्टेंस
between my act and the actual crime. Right. For example, there was a woman. She had a fight with her family members. She had fight with her husband. और बहुत ही आवेग में, बहुत ही इम्पल्स में, गुस्से से वो घर के बाहर दौड़ती हुई निकलती है और कहती हुई निकलती है कि आज मैं अपनी जान दे दूंगी, राइट, और मेरे उस मौत के जिम्मेदार तुम होगे। और ये कहते हुए वो दौड़ती है लगभग 400 मीटर की दूरी पे। 400 मीटर्स इज गुड डिस्टेंस। एक कुआं था, देयर वाज अ वेल, तो उसी की तरफ दौड़ती है, ये दिखाती कि जैसे कि कुएं में कूद के जान देगी। लेकिन लगभग 400 मीटर की दूरी जब थी ही, उसी वक्त वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। नाउ उस पर अटेम्प्ट टू सुसाइड जो एक ऑफेंस है का चार्ज लगा। कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि whether the offense of attempt is made out or not, right? So whether the offense of attempt is made out or not. The court saw that there was still a distance of 400 meters and it would have taken at least 5 to 10 minutes for her to reach there, and there was a probability that upon reaching the embankment of the well का जो गोल गोल बना होता है embankment, she might have made changes in her decision. और उससे पहले भी शायद ये पॉसिबिलिटी थी, राइट। अगर वो एम्बैंकमेंट तक पहुंच के झुकती हुई अगर पकड़ी जाती, उस वक्त अगर रोक लिया जाता, तब तो हम बिना डाउट के कह सकते थे कि यस, द अटेम्प्ट वाज ऑलमोस्ट डन, दैट क्राइम ऑलमोस्ट हो चुका था। बट एट दिस स्टेज व्हेन देयर इज डिस्टेंस between her house, in-laws house, and the well, and that is also considerable distance. 400 meters is a considerable distance. She is running towards the well. रास्ते में काफी टाइम उसके पास था, जो किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, बैकग्राउंड देखा गया इस लेडी का, तो वैसे वो नॉर्मल थी, कभी कभी लड़ाई होती थी और ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। तो पॉसिबल था कि इस बार बहुत ज्यादा बड़ी प्रोवोकेशन हुई थी, इसलिए निकल पड़ी थी। लेकिन जिसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसा करने का नहीं, वो पक्का मौका मिलने पे नहीं करेगा, राइट, पेनिटेंट हो ही जाएगा, विल बी रिपेंटेंट ऑफ द डिसीजन दैट ही और शी हैज टेकन। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वी विल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अक्यूज्ड पर्सन हियर। हम यहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, राइट। तो आपको लोकस पेनिटेंशिया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पेनिटेंशिया मीन्स ample time, ample opportunity for making changes in the decision, right, for resurgence of rationality। ये अगर कोर्ट को दिखता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अक्यूज्ड का अगर पता चलता है, जिसमें लगता है कि accused has always had a rational behavior, right, the accused had always had a rational behavior, हमेशा से उसका rational behavior रहा है, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पेनिटेंशिया की एप्लीकेशन की जाएगी और बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को दिया जाएगा। तो इस केस में, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एक महिला दौड़ती हुई भाग रही है टुवर्ड्स द वेल और उसको बहुत जल्दी पकड़ लिया गया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया उस लेडी को और शी वाज एक्विटेड। सो लेट्स सी फ्यू केसेस and questions in order to distinguish between the stage of attempt from the stage of preparation। तो इसमें सबसे पहला केस, अब हम यहाँ पे ना केस लॉ से पता करेंगे अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में कहाँ अंतर है, मतलब कहाँ प्रिपरेशन खत्म होता है और अटेम्प्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, राइट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने अटेम्प्ट जैसा कुछ कर भी लिया, सपोज आई हैव डन सम एक्ट मान लो कर लिया, मैंने कोई एक कदम मैंने उठा लिया जो टुवर्ड्स द क्राइम है, लेकिन बाय द वे मैं प्रिवेंटेड हो गया, तो देखना होगा कि प्रिवेंटेड कैसे हुआ। हाउ हैव आई बीन प्रिवेंटेड? इफ आई हैव बीन प्रिवेंटेड बाय द फोर्सेस आउटसाइड मी, मेरे बाहर जो फोर्सेस हैं, यानी किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने रोक लिया,
ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने मुझे रोक लिया है, एक्सटर्नल ह्यूमन एजेंसी की वजह से मैं रुका हूँ, तो फिर ये अटेम्प्ट है, क्योंकि एक्ट तो मैं कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम, राइट। और उसने अगर मुझे नहीं रोका होता तो वो एक्ट बढ़कर कमीशन ऑफ क्राइम हो ही गया होता। फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज क्लियर, राइट। दिस इज ऑलवेज कॉल्ड अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, राइट। अटेम्प्ट है कि नहीं है ना, इसे आप कहते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो कोर्ट यहाँ पर देख रही है कि किसने रोका, लेकिन अगर मान लो मैं एक्ट शुरू कर चुका तो टेक्निकली अटेम्प्ट हो चुका, लेकिन फिर भी मैं प्रिवेंटेड हो गया, बट इस बार प्रिवेंटेड होने के पीछे वजह मैं खुद हूं, मेरी कोई लापरवाही, मेरी कोई एक्ट या मेरा कोई ओमिशन, राइट, उसकी वजह से आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग द एक्ट, राइट, द पेनल्टीमेट एक्ट, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग द लास्ट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दो आपको कहानियां सुनाता हूं सिमिलर, राइट, बस हल्का सा फैक्ट में चेंज होगा, बट दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इन वन केस, A goes to B and purchases some drugs from him, right, which is forbidden, which is prohibited, उससे वो ड्रग्स परचेज करता है, और बी ने उसे चीट कर दिया। बी ने एक्चुअली ड्रग की जगह उसे कॉमन सॉल्ट दे दिया, सोडियम क्लोराइड, राइट, और ए ने टेस्ट भी नहीं किया वहां पर, उसने वो वायल्स जो शीशियां थी वो ले आया और सीधा चला गया मार्केट की एक जगह पर जहां पर वो उसको बेचना चाहता था, वहां पर उसके कस्टमर्स आने वाले थे, पहले से ही तय था। लेकिन इससे पहले कि बाकी कस्टमर्स आते, एक ट्रैप कस्टमर, डिकॉय कस्टमर जिसको बोलते हैं, जो पुलिस वालों ने ही लगा रखा था, वो आता है, और जैसे ही वो शीशियां उसे पकड़ाता है, पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं, राइट, नार्कोटिक्स वाले उसे दबोच लेते हैं। अब यहाँ पर उस पर चार्ज लगता है। अब फोरेंसिक से तो पता चल जाएगा, टेस्ट से तो पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि पोजेशन ऑफ ड्रग्स का एनडीपीएस एक्ट का केस तो नहीं बना, पोजेशन ऑफ ड्रग्स का नहीं बना, सेल ऑफ ड्रग्स का नहीं बना, क्योंकि ड्रग्स है ही नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी, उसने अटेम्प्ट का, राइट, अटेम्प्ट टू सेल कॉन्ट्राबैंड फॉरबिडन नार्कोटिक्स, ये चार्ज लगा दिया, और फिर भी उसे एनडीपीएस के घेरे में लिया, और आईपीसी के भी ओवरलैप, अटेम्प्ट तो आईपीसी में भी। Now the question before the court was that whether this was attempt or not. The answer was given in the affirmative. This was said to be the attempt. इसे attempt नाम का ऑफेंस कहा गया, राइट। वही एक दूसरी कहानी, इस बार ए ने बी से ड्रग्स परचेज किया, बी ने उसे ड्रग्स दिया, राइट, तो एक्चुअली बॉटल में ड्रग्स ही, व्हाइट कलर का पाउडर, ये इसे अपने घर ले गया, राइट, शाम को इसे जाकर बेचना था, किसी पार्टी को डिलीवर करना था। तो इस बीच क्या हुआ कि इसके घर पे इसी तरह के सिमिलर बॉटल्स, राइट, और एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये लोग जो स्मगल करते हैं या ड्रग पेडलिंग करते हैं, वो ना रखते भी ऐसे वायल्स हैं, वो रखते भी ऐसी शीशियां हैं जो घरों में इस्तेमाल होती है, कि ताकि शक ना हो, पुलिस वालों को लगे कि भाई नमक ही लेके जा रहा है। अब संजोग से इसने उसको जहां रखा, वहां पे ऐसी ही बोतल में एक्चुअल नमक भी रखा हुआ था। शाम को जल्दबाजी में जब इसके पास फोन आया कि कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ, तो जब ये जल्दबाजी में नमक का ही शीशी उठाकर चला जाता है, और डिलीवरी करने जैसे ही पहुंचता है, वहां पे पुलिस वाले पहले से एम्बुश करने के लिए तैयार थे, उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। जब ये केस बना अटेम्प्ट का, तो जज ने फैसला किया दिस इज नॉट अटेम्प्ट,
जज ने कहा दिस इज जस्ट प्रिपरेशन। जज ने कहा कि प्रिपरेशन स्टेज में ही बंदा रह गया है, द पर्सन कुड नॉट गो बियॉन्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन के स्टेज के बाहर जा ही नहीं पाया। अब आप देखो कि both the stories are 99.9% similar with one change in fact कि previous case में he was prevented from committing the offense of sale of narcotics, he was prevented from possession of narcotics by someone else, B the cheater, B who had cheated A, right, and instead of drugs had supplied salt to him, right। तो किसी दूसरे के, नहीं तो ये तो बेच ही चुका था, ये तो नारकोटिक्स को पोजीशन में रखकर उसे बेच ही चुका था, वो तो बी की चीटिंग ने इसे प्रिवेंट कर दिया। सो ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम सम एक्सटर्नल फैक्टर, जबकि दूसरे केस में ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम कंप्लीटिंग द सेल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंस। इसकी खुद की ओमिशन थी, इसकी खुद का नेग्लिजेंस था कि वो बेच नहीं पाया, क्योंकि खुद अपनी लापरवाही से ड्रग की शीशी की जगह वहां पर वो नमक की शीशी उठाकर चल पड़ा। Here there is no any third person who prevented, right? तो एक्चुअली यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए दो लोग थे, एक जिन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने भी प्रिवेंट ही कर लिया ना, सेल तो होने नहीं दिया, लेकिन चूंकि डिकॉय कस्टमर उन्होंने रखा था, एक तरह से सेल हो ही जाता। बट द फैक्ट इज कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस he was prevented from selling it because of the cheating committed by B, an external factor, whereas in the latter case he was prevented from completing the sale of narcotics because of his own omission. So in the latter case benefit of doubt must be given, no case is made out। और पता है यहाँ पे कौन सा डाउट बनता है? डाउट ये बनता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बनती है कि शायद ये नमक ही ड्रग्स कह के बेच रहा, फेक ड्रग्स बेच रहा था। तो फेक ड्रग्स बेचना तो फिर नारकोटिक्स में नहीं आएगा ना, फिर एनडीपीएस एक्ट में वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो एनडीपीएस वाले ऑफेंस का अटेम्प्ट बना ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो अटेम्प्ट। तो जहां पर आप किसी बाहरी शक्ति के कारण प्रिवेंटेड हो गए हैं ऑफेंस करने से, जबकि एक्ट आप कर ही चुके थे, दोनों ही केसेस में देखा कि क्राइम की दिशा में आप एक्ट शुरू कर चुके हैं। कैसे? बोतल में लेकर उसे निकलना, मार्केट में पहुंचना, सामने वाले से डील को तय करना, सामने वाले को बुलाना, ये सब क्या है? ये सब फोर्थ लास्ट, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट एक्ट ही तो है सारे। उसके बाद लास्ट एक्ट हो जाता है जिसमें कि आप ट्रांसफर कर देते प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर देते उस शीशी को। तो एक्ट तो आप कर ही चुके थे। प्रिपरेशन के बाद, प्रिपरेशन तो आपका बस वो बॉटल लाना था जो 20 से आप परचेज करके लाए, वो प्रिपरेशन था, और आप सेल करने के लिए निकल पड़े हो, ये आपका एक्ट है। तो इसलिए एक्ट होने के बावजूद अगर आप प्रिवेंटेड हो जाते हैं तो देखना है कि हु प्रिवेंटेड, was it you yourself, then there is no case of attempt made out, and was it because of some external factor, then the case is made out, then the case of attempt is made out, right? So this is also very interesting thing, you must keep this in mind। So now we see various cases on attempt। रामक्का वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1884 का केस है, बड़ा अच्छा केस है, यही कहानी मैंने आपको सुनाई थी। द अक्यूज्ड वुमन, इस पर चार्जेस लगा था अटेम्प्ट टू सुसाइड का, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगा था। सो द अक्यूज्ड वुमन रैन टू जंप इन द वेल uttering that she would commit suicide। वो कुएं की दिशा में दौड़ती है, बोलती हुई कि मैं सुसाइड कर लूंगी। Bystanders fought her। The police arrested her and instituted a case against her for attempt to commit suicide। So what was the judgment here? The court held that she was caught by the bystanders. She intended to jump in the well. However, she might have changed her mind. Locus penitentia।
So the doctrine of locus penitentia was applied here because there was some considerable distance between the house and the well, and the probability of resurgence of rationality was also possible. So she might have changed her mind before jumping into the well. Benefit of doubt was given and she was acquitted. So now we solve a question, a problem before us. A and B were husband and wife and husband, aged 20 years and 25 years respectively. One day they quarreled. At late night, A came out of the house, taking her 6-month-old baby in her arms. 6 महीने के बच्चे को अपनी बाहों में लेती हुई बाहर आ गई। बी उसके पीछे पीछे भागा, रुक जाओ, धमकी देता रहा कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो। और जितना ये मारने की धमकी दे, उतना ही और गुस्से में और डर के मारे कि पिटेंगे हम, फिजिकल असॉल्ट होगा, तो उस डर से बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम द हस्बैंड, ए जम्प्ड इनटू अ वेल अलोंग विथ हर चाइल्ड। ठीक है, तो खुद भी कूद गई, बच्चे को भी लेकर चली गई। तो 2 चार्जेस लगेंगे यहाँ पर। हाउ मेनी चार्जेस? एक तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगेगा क्योंकि ये बच गई। शी डिड नॉट डाई बट द चाइल्ड डाइड। तो चाइल्ड डाइड तो फिर ये कहा जा सकता है कि शी डिड एन एक्ट विच इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ। और नॉलेज तो था ही, इस बात का नॉलेज तो हर रीजनेबल पर्सन को होता है कि कुएं में कूदने से मौत हो जाती है। तो इसलिए इसे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज भी लगाया गया। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड अपना और कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बातें हैं गौर करने की। एक कि क्या ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है, दूसरा कि इज शी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि हस्बैंड से मारपीट का जो डर है, कहीं पर भी जो फैक्ट्स हमारे सामने, उससे ये नहीं पता चलता कि जान का खतरा था। हस्बैंड के साथ लड़ाई थी, लड़ाई में थोड़ा सा फिजिकल असॉल्ट होता, बट हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स है ये नहीं, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सामने कुछ भी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हस्बैंड के हाथ में कोई जानलेवा हथियार था, had some deadly weapon in his hand, कुछ नहीं। तो फिर जब इस तरह की वो धमकी दे रहा है तो मारने कितना मतलब थप्पड़ का ही हो सकता है, राइट, जिसको कि आराम से वो रेजिस्ट करके कहीं और भी जा सकती थी, गांव में किसी और से मदद मांगी जा सकती थी, राइट। ऐसा भी कोई खतरा उसकी लाइफ पर नहीं था कि हम ये कह लें कि दिस वाज अ डिसीजन टेकन इन वेरी ग्रेव सिचुएशन, एक बड़े ही ग्रेव सिचुएशन में दिस डिसीजन वाज टेकन, राइट। तो एक इरेशनल एक्ट तो था ये, नो डाउट, बट वी हैव टू सी दैट वेदर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट इज मेड आउट और नॉट। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड तो ये है, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड and she was actually held liable for culpable homicide. But the question is that whether she is also liable for abetment, right? Abetment. तो कोर्ट में देखते हैं क्या फैसला सुनाया यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पेनिटेंशिया लगा सकते हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से कुछ नहीं लगेगा, कूद तो गई कुएं में, कुएं में कूद गई है वो, शी इज नॉट प्रिवेंटेड, राइट। It was rather the destiny, it was rather the providence that she survived. She did not drown into the well. अटेम्प्ट का तो केस ही नहीं, ये तो मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड का तो है ही है, चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड तो बिल्कुल लगेगा। वो तो प्रोविडेंशियल एस्केप था, किस्मत थी, डेस्टिनी था कि डेथ से बच गई।
डेथ नहीं हुआ. So the penultimate act was already done before any external force could stop her. ठीक है. So the given problem is, अब इसमें ना एक केस था, धीरजिया वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट. The given problem is identical with case Dhirajia versus State. In that case, the Allahabad High Court held that in those circumstances, the accused could not be prosecuted under Section 309 as she jumped into the well to escape from her husband, but not with the intention of committing suicide. However, the High Court held her guilty under Section 304, culpable homicide for causing the death of the child. अब यहाँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही टर्न अराउंड कर दिया भाई. हमें तो लग रहा था कि अटेम्प्ट तो हो चुका है, कुएं में तो ये कूद गई, वो तो किस्मत की बात थी कि जिंदा बच गई. हम शायद यहाँ या हमसे पता है यहाँ क्या गलती हुई. what mistake did we commit here? We forgot that the first stage is intention. After intention, preparation, and then comes attempt. We forgot that there must be mens rea plus actus reus. In this case, there is an actus reus. Act wrongful है, कूद जाना is a wrongful act. लेकिन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से ये नहीं लगता कि उसका इरादा सुसाइड करने का था. आपी धापे, right, in a hurry, in a haste, when the husband was chasing her, her mind did not work much, right, for thinking of suicide, because the surrounding circumstances don't show that she was intending to commit suicide. इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिकॉर्ड पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये पता चले कि उसका सुसाइड का इरादा था. अब जैसे पिछली कहानी जो हमने पढ़ी, उसमें वो महिला घर से निकली बोलती हुई कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगी, आई विल कमिट सुसाइड. तो वहां पर कुछ विटनेसेस थे जिन्होंने अपने कानों से सुना था कि वो सुसाइड की बात कर रही थी, और वहां पर अगर किसी ने उसको ना रोका होता और कुएं में कूद गई होती तो ये अटेम्प्ट पक्का होता अगर बच गई होती. लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड पर आपने जो पर फैक्ट्स पढ़े हैं, जो फैक्ट दिया हुआ हो ना क्वेश्चन में, मानो कि वो साबित फैक्ट है, मतलब वो वही ऑन रिकॉर्ड है. अब आपको फैसला करना है व्हाट इज ऑन रिकॉर्ड. ऑन रिकॉर्ड इज देयर एनीथिंग टू शो इंटेंशन? नो. तो बस यहाँ पर एक्टस रियस ऑफ जंपिंग इनटू द वेल, बट इंटेंशन टू कमिट सुसाइड नहीं. सिंस देयर इज नो इंटेंशन टू कमिट सुसाइड, हेंस देयर इज नो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. अटेम्प्ट से पहले इंटेंशन आता है, पहला स्टेप वही था इंटेंशन. ऑन रिकॉर्ड देयर इज नथिंग टू शो इंटेंशन. कुछ तो होता जिससे कि हम इंटेंशन साबित कर पाते, क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड में इंटेंशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर उसका नहीं दिया. लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं. कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड इन सेक्शन 299. अब सेक्शन 299 में आप देखेंगे कि एक सिचुएशन ऐसा भी है कि वेयर अ पर्सन नोज दैट द एक्ट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, राइट. वो जानती है, तो इतना तो वो जानती है कि भाई 6 महीने का बच्चा कुएं में लेके कूद रही है, बच्चा कुएं में जाएगा किसी भी रीजनेबल आदमी को, राइट. इतना तो पता ही होगा कि दिस इज अ डेंजरस एक्ट, राइट. एंड दिस डेंजरस एक्ट with knowledge, it is reasonably foreseeable that this will cause death of the child. It can cause death of an adult person also. So it was reasonably foreseeable. The ingredients of section 299, that is culpable homicide, can be seen in the facts. So what was on the record? क्या था रिकॉर्ड पे? 299 के ingredients थे रिकॉर्ड पे, right? The ingredients of section 299. Hence, the offense of culpable homicide was established. But since there was no intention to commit suicide, there is nothing on record to show. There is no evidence produced by the prosecution to show that there was intention to commit suicide.
Hence, only the actus reus of committing suicide was there, but no intention. So the attempt to suicide charge was not found